दफ्तर खारजा की तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान ने मर्ग पर सरमचार के नाम से दहशतगर्दों के खिलाफ मुसद्दिका इत्तलात पर ऑपरेशन किया। कई साल से ईरान को दहशतगर्द गिरोहों की पनागाहों से मुताल्लिक आगाह कर रहे हैं। ईरान की जानिब से फौरी इकदामात न करने पर जवाबी कार्रवाई की गई। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तर्जुमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुकम्मल पासदारी करने की अज़म का इजहार करने के साथ साथ ईरान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुकम्मल एहतराम की यकीन दहानी भी कराई। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. As a responsible member of the international community, Pakistan upholds the principles and purposes of the UN Charter, including territorial integrity and sovereignty of member states. Pakistan has said that we would like to have peaceful relations with all countries in the region, including with our neighbor Iran. And we have also said that Pakistan's security and sovereignty is sacrosanct, and Pakistan remains ready and is willing to protect itself.